My name is Meghna Sahani and I'm from Punjab. My name is Muskan. I'm from Delhi. मेरा नाम अनुराग टोपनो और मैं झारखंड से हूँ. My name is Abhito. I'm from Nagaland. मेरा नाम साहिल सागर है और मैं चेन्नई से हूँ. Hi, I'm Jitin Prasannan from Kerala. This is Kashish. I'm from Maharashtra. I'm Snigdha Tiwari and I'm from Bangalore. आज मेरे इस काम का, इस आर्टवर्क का मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो लोगों में डर या फिर खौफ ना फैलाएं, बल्कि हमदर्दी और प्यार बांटें. मेरे इस काम में जो सिक्योरिटी गार्ड है वो लोगों पे बुलेट्स फायर नहीं कर रहा है, पर बबल्स ब्लो कर रहा है, लोगों को खुशी बांट रहा है. वो चाहता है कि लोग खुश रहें, ना कि उससे डरें. In this painting made by the artist Shipra, is explained how the livelihood of Kashmiris have been destroyed due to the normal day-to-day activities of the army around. The pellet shot out of the boots of the army is a significance of how the lives of the citizens of the state have been destroyed and they're in a state of helplessness because of the activities that go around by the army. The hands from beneath are in the shape of a bird or the peace bird called dove. They stand in solidarity. The rest of the nation, it is a significance of how the rest of the nation stands in solidarity with the entire surrounding, with the entire atmosphere of Kashmir in general, and they also stand in prayer that their helpless situation comes to rest. My work reflects the current situation of Kashmir. Like, we all know that Kashmir is the heaven on earth, and we all people want to go to Kashmir to admire its beauty. But at the same time, people fear to go because of things are happening over there. So in my photographs, I want the viewers to feel that how will India look without Kashmir. So let's not only love Kashmir, let's love Kashmiris too. Beautiful Kashmiri woman I have shown in this painting who got blind because of parrot shellacking. Her beauty got ruined because of parrot shellacking. She got blind. So I am trying to depict that comparing the beautiful Kashmiri woman with the beautiful Kashmir. Through this canvas, I want to say that I want to remember Kashmir as a mirror image of heaven. I have incredible love for nature and its creations, and it's very disturbing for me to realize the current situation in Kashmir. I play with the graphics. There's a lot that can be conveyed just by the type. So here I have chosen a word, Kashmiri word, Atvas, which means handshake. I have tried to express the Atvas word in 3 different fonts. I have chosen a pixelated font just to represent the distorted state of Kashmir. And the next one, I have removed the upper line of a Hindi font which is known as a Shiro Rekha to show the sense of being incomplete without a top. Seeing the whole current scenario of Kashmir, as an artist, what I could relate to is that a burn or a scar that Kashmir has faced right now is not just a story about their struggle, but also the fact that they've come out stronger. The art that I've created is aesthetical yet symbolic in its own way. It just links the whole of the nation in the same struggle that Kashmir is facing right now. So I'm making a painting which depicts the plight of the Kashmiris. It presents the discomfort that the Kashmiris are undergoing right now. So the painting illustrates a woman wounded by gun pellets. The first canvas here is pretty self-explanatory, as the peace lily has been shown and a woman sitting right in front of it with red hands covering her body.
Coming to the next canvas, here I talk about how we need to sit back and introspect. So this entire canvas has a lot of activities that we do in our daily lives, which we do in a reflex, because we've been taught, and we do not even sit back and think twice about how these activities are making an impact in our entire environment. जो ये मैंने एक बुक जलाई है वो बिलोंग करता है कश्मीर में जो स्कूलों को जलाया गया है, जो बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उनकी एजुकेशन को लेकर के, और लोगों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसको लेकर के। एक बच्चा जब पढ़ा लिखा नहीं होगा, ना कभी वो अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता, ना ही कभी कोई काम कर सकता है। जैसे कि हम बोलते आ रहे हैं हमेशा से कि जो बच्चा होता है वही एक देश का फ्यूचर होता है, और जब हम ऐसा कर देंगे एक फ्यूचर के साथ, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने लोगों से कि और क्या हो सकता है। जो मेरा ये दूसरा इंस्टॉलेशन है वो लोगों को डिपिक्ट करता है। जो ये लोग हैं ये माचिस के रूप में, और जो तिलियाँ पड़ी हुई हैं वो हमारे रिलेटिव, हमारे दोस्त, मेरे कुछ साथी या सहपाठी कह सकते हैं, वो भी हैं। ये लाल मैंने इन पे कलर माचिसों पे इसलिए करा है कि लाल जो है वो क्रोध है लोगों के अंदर, लोगों के सीने में बहुत क्रोध है, लेकिन दिमाग जाने जो मैंने सफ़ेद करा है ऊपर, वो दिमाग को शो करता है कि जो दिमाग में अभी शांति है। ये तीसरा इंस्टॉलेशन जो मैंने करा है चेयर का, एक सफ़ेद चेयर दिखाई है मैंने। सफ़ेद चेयर आपको लग सकता है कि शायद शांति का प्रतीक, लेकिन उसके ऊपर जो लाल धब्बे लगे हुए हैं वो शांति का प्रतीक नहीं हो सकते। वो उन लोगों के खून है जो लोग सताए हुए हैं, या जो लोग मारे गए हैं। इतने लोग मारे गए, इतने बच्चे मारे गए, हमारे दोस्त मारे गए, लेकिन हम कुछ कर ना सके। लेकिन अब बारी है कुछ करने की, कुछ ऐसा करने की लोगों को जिससे कुछ अच्छा महसूस हो कश्मीर के लोगों को, क्योंकि वो बहुत ही दुख झेल चुके हैं अभी तक।